Recording progress. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the official name of the highest civilian award given in India? Highest civilian award given in India. क्या नाम है? Yes. Good. The answer is भारत रत्न. चलो, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. अब सबसे पहली बार भारत रत्न किसको मिला? सबसे पहली बार भारत रत्न किसको मिला? गुड. दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर. नेक्स्ट. Which is the smallest independent country in the world, completely surrounded by the city of Rome? The answer is Vatican City. Yes, Vatican City is the smallest country in the world. And the largest country in the world? Largest country in the world. Very good. That is Russia. Good. Next. What term is used in tennis when a player serves a ball that lands perfectly in the bounce but their opponent fails to touch it? यानी सर्विस बढ़िया हुई है बट अपोनेंट उसको पकड़ नहीं या छू नहीं पाता है, तो उसको क्या कहते हैं? एस. दैट इज एस. ओके. नेक्स्ट. In football, soccer, when what color card does the referee show to instantly send a player off the field for a serious foul? So that is red card. ठीक है. ओके. यस, जब भी कोई फाउल करता है तो उसको, उस प्लेयर को आउट ऑफ द फील्ड जाने के लिए यही कार्ड दिया जाता है, रेड कार्ड. ठीक है. एंड द येलो कार्ड इज फॉर द वार्निंग. येलो कार्ड यूज होता है वार्निंग के लिए, रेड कार्ड से सीधे ही बाहर. नेक्स्ट. What do you call the high-tech, lightweight, two-wheeled vehicles used by racer in the Tour de France cycling event? The answer is road bicycle. Answer is road bicycle. Next. What are the 5 official color of the interconnected Olympic rings? Olympic rings में 5 रिंग्स होती हैं और 5 ही कलर्स भी होते हैं. तो वो कौन कौन से कलर होते हैं? 5 कलर्स होते हैं, हमें पता है. ओके, चलो चेक करते हैं. लेट्स सी. दैट इज ब्लू, ब्लैक, रेड, ग्रीन एंड येलो. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. In a badminton, what is the smallest cone-shaped object calls that player hits back and forth over the net? ठीक है. The answer is that is shuttlecock or birdie. ठीक है. Now next. What unique field sport allows players to score using both their feet to kick the ball and their hands to bounce and pass it?
गैलिक फुटबॉल और ऑस्ट्रेलियन रूल्स फुटबॉल। ठीक है, ये अलग टाइप का फुटबॉल होता है। नेक्स्ट, what term is used when a bowler dismiss three batsmen within three consecutive deliveries? लगातार तीन बॉल पे तीन आउट, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फ्री हिट। क्या कहते हैं? फ्री हिट। नहीं, हैट्रिक कहते हैं यार। फ्री हिट, देखो, थ्री हिट नहीं, फ्री हिट तब होती है जब नो बॉल्स होती है इन गेम। नो बॉल जब होती है तब फ्री हिट होती है। लेकिन अगर लगातार तीन बॉल पे तीन विकेट हुए तो दैट इज हैट्रिक। मैंने यहां से बोला फ्री हिट, तो वहां से आंसर चैट बॉक्स में आ रहा है फ्री हिट। खुद का दिमाग भी लगा लो भाई। What target score must a player reach to win a standard single game frame in professional snooker? एक प्रोफेशनल स्नूकर को क्या स्कोर टारगेट होता है अगर वो सिंगल गेम खेल रहा? तो स्कोर फिक्स नहीं होता, बस उसको करना क्या होता, 21 बॉल्स मिलती हैं उसको। ठीक है, जो सबसे ज्यादा बॉल्स पॉकेट करेगा ही विल बी द विनर। ठीक है, ओके। स्नूकर यानी, स्नूकर कह सकते हो उसको, पूल कह सकते हो आप, बिलियर्ड्स कह सकते हो। उन तीनों एक ही गेम का नाम है। नेक्स्ट, what unique sport involves athletes racing down an icy track on a tiny sled while lying flat on their stomach head first? So the answer is skeleton. Okay. Next, how many squares are there on a standard competitive chessboard? चेसबोर्ड में कितने स्क्वायर टोटल होते हैं? 64. That is 64 squares. 32 black, 32 white. Next, which sport takes place in a large indoor bowl structure called a velodrome? The answer is track cycling. Okay, track cycling. Next, in goal, what specific term is used when a player completes a hole using one shot less than the expected standard score? That is birdie. बर्डी का मतलब कि जब प्लेयर एक बॉल एक ही बार मारता है लेकिन बॉल उस पॉकेट या होल के अंदर चली जाती है कितनी भी दूर से मारा, तो उसको कहते हैं बर्डी। नेक्स्ट, व्हाट वाटर सपोर्ट requires a team of athletes to row a long boat in a perfect sense using a single oar each? The answer is rowing or crew. Rowing is also a type of sport. What do you call the heavy wooden bar across the top of the two vertical posts in a football goal? Crossbar. जो ऊपर फुटबॉल के ऊपर लगाया था ना, दोनों डंडों के हॉरिजॉन्टली, उसको क्या कहते हैं? क्रॉस बार। Which winter sport combines which winter sports combines cross country skiing with target rifle shooting? The answer is biathlon. The answer is biathlon. Next, what basic piece of equipment is worn over the knuckles and wrist in boxing to prevent fractures?
हैंड रैप्स अंडर द बॉक्सिंग ग्लव्स। बॉक्सिंग ग्लव्स के नीचे भी एक हैंड रैप पट्टी टाइप होती है जिसको बांधा जाता है ताकि हाथ या रिस्ट मुड़े ना। ठीक है। नेक्स्ट, what is the process called when a liquid turns into a gas without boiling, like a puddle drying up in the sun? जब लिक्विड बिना बॉइलिंग के गैस में चेंज हो जाता है तो उसको कहा जाता है इवेपोरेशन। ठीक है। और जब बॉयल करके लिक्विड को गैस में चेंज किया जाता है तो उसको कहते हैं वेपराइजेशन। ठीक है। Now, which specific part of the human eye detects light and projects the image of our brain? Retina. Okay. Next, what basic force keeps the moon orbiting the earth instead of floating off into deep space? मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटी, ग्रेविटेशन। यही रीजन होता है कि आप बॉल ऊपर हवा में फेंकते हो तो वापस ग्राउंड पे आ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल an animal that has a heavy shell outside its body instead of bones inside, like an insect or a crab? The answer is invertebrate. Invertebrate. Which gas makes up the absolute largest part, about 78% of the air we breathe? हमारे एयर में 78% ऑफ द पर्सन गैस जो है वही है, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड बाकी 1% में सब सारी गैसेस। नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल द अंडरग्राउंड हॉट लिक्विड rock before it erupts out of a volcano? The answer is magma. ठीक है, मैग्मा। बाहर निकला तो मैग्मा, और अगर वॉल्केनो के अंदर है देन इट इज कॉल्ड द लावा। जब बाहर निकलेगा तब लावा नहीं कहलाता, तब वो कहलाता है मैग्मा। What basic type of force act against moving object to slow them down when two surfaces rub together? The answer is friction. फ्रिक्शन फोर्स वर्क में आती है, इसी की वजह से आप लोग चल पाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम चल नहीं सकते। What is the name of the white waxy substance found in our blood that can build up if we eat too much fatty food? The answer is cholesterol. The answer is cholesterol. Next, what special tool uses a magnetic needle to always point towards the Earth's magnetic north? कंपास। कंपास में हमेशा एरो किधर होती है? नॉर्थ में। ठीक है। नेक्स्ट, what type of severe weather storm forms over warm ocean water and rotates around a calm center called the eye? Hurricane or cyclone or typhoon? What do you call a rock that has been completely transformed over time by intense underground heat and pressure? Metamorphic rock. उसको मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। मैग्मा लावा ही होता है लेकिन रॉक फॉर्म में यूज चेंज होता है ड्यू टू द हीट एंड हाई प्रेशर। What are the tiny microscopic organisms that can cause infections, illness, and disease called? Microbes or germs or pathogen. Okay. Next, what type of clean energy is generated by using large turbines to capture the movement of rushing wind? Wind energy or kinetic energy. What is the thick protective layer of fat under the skin of marine mammals like whales and seals called? Blubber. That is
blubber. What do we call a physical material that does not allow electricity or heat to pass through it easily? इंसुलेटर. इंसुलेटर उसे कहते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी या हीट पास नहीं हो पाती है, और कंडक्टर जहां से इजिली पास हो जाती है. Which specialized blood cells are responsible for carrying fresh oxygen from our lungs to the rest of our body? रेड ब्लड सेल्स, आरबीसी. आरबीसी काम होता है ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में कैरी करके हमारी बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना. व्हाट इज द साइंटिफिक टर्म फॉर द कंप्लीट वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑर्गेनिज्म living in an ecosystem? Biodiversity. That is biodiversity.